It's a stupid face you make. Huh? There it is. Ew, old man, get it together. Hey, you okay? Check. You having a heart attack? Check. Hey, look at me. There you go. Now you back.
Good afternoon and welcome on this Sunday afternoon. It's going to be a really high-flying sort of a match this, and as we are just witnessing this beautiful rich city here, Ranchi, we have that all-important match for the Maratha Marvels because they'll be fighting for that 7th place. They are in that elimination zone, and against the Panchala Pride, they are almost hanging on to that 7th spot, and Maratha Marvels are on the 8th spot. They have to win this game to make sure they will go ahead and fight it out for that 7th place into that challenger round, as we have the Vijayanagar Weaves and the Periyar Panthers after this. But now, right now, it's match number 64, and Maratha Marvels will be taking on the Panchala Pride as we look into that points table. It'll be really interesting to see that 13 games for each, 4 wins for each, and Panchala game extra, and they've got a tie as well. But they have a slightly better points per match, and Maratha Marvels now today with a win will be making sure that they go back onto that 7th place. So it's a must win for the 8th placed Maratha Marvels. Let's go down to Harshit to bring the players on the mat. So thank you so much नवीन, और एक बड़े रोचक मुकाबले की तरफ हम सभी बढ़ चले हैं, जहां पर ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन हो सकता है, जिस तरह से आपने बताया। तो चलिए अब समय है यहां पर हमारे बीच में दोनों ही टीमों को सबसे पहले मैट पर बुला लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे टीम ऑफ प्राइड, लेट मींस पंचाला प्राइड। और चलिए पंचाला प्राइड के विरुद्ध नजर आएंगे हमारी द टीम ऑफ मार्वल्स। लेट्स इनवाइट मराठा मार्वल्स। Both the teams have arrived on the mat, and it's that all-important game for the lads in this orange strip and white jersey, the Maratha Marvels, because it's going to be a real important game. And against Panchala Pride, it's not going to be easy because Aditya Kumar and Ankit Singh are there in the corners, and Aman Raj and Arman, the skipper, will be raiding along with Prince Raj, and it's also Nishant Kumar and of course Satyam Singh in the covers for them to support really well. But then Vishal Kumar, Sandeep Singh, Vaibhav Raj, Sanju Saini, and Bhaiya Aryan, right? That's a nice name to have it along with the coach Rohit Kumar. And Arshit, will we get in the Maratha Marvels now from you? जी हाँ, तो चलिए आपने बहुत सही तरीके से यहाँ पर बात की पंचाला प्राइड की। बात करना चाहेंगे मराठा मार्वल्स की। उदय दबास आज फिर से यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वीरू यादव को आज एक बार पुनः मौका मिला है, आरव यादव का निभाएंगे साथ। निखिल से आप उम्मीद एक बार फिर से रेड में थोड़ी सी ज्यादा लगाते हैं, कृष्ण यादव को साथ देना होगा यहाँ पर। अनुभव राठी का बदलाव यहाँ पर शायद आपको देखते हुए नजर आएंगे, और अंकित यादव वहां पर आपको लेफ्ट कॉर्नर संभालते हुए नजर आएंगे। गौतम तोमर का शुरुआती साथ में जगह नहीं मिली है। रोहित कुमार, अभिषेक राठी, धनंजय और उदित यादव सब्स्टिट्यूट में नजर आएंगे। कुछ बदलाव आपको मराठा मार्वल्स में नजर आए हैं, और पंचाला प्राइड और मराठा मार्वल्स के लिए नवीन ये दोनों डू और डाई की तरह हो सकता है। पर चलिए हेड टू हेड की हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। पंचाला प्राइड इसमें आगे रही है, 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले पंचाला प्राइड के पक्ष में गए हैं नवीन। Yeah, in the history of Yuva Kabaddi series, it is Maratha Marvels once again being pushed back, so they have to win this at any cost. What happened in the toss will be really interesting to see, because on the right we have Arman, skipper. He did not win that one. It's Panchala Pride, Ankit Yadav there winning, Maratha Marvels is Ankit Yadav winning the toss, and he will be selecting the court there. But Arman, the raider for Panchala Pride, will be the man to watch out for. Not to speak about too much on that tackle strike rate, but this is the must-win game for his side as well, because he will have a lot of competition from Nikhil and especially Uday Dabas. So we will see how that will pan out. और वहीं पर अगर हम बात करें मराठा मार्वल्स के खिलाड़ी निखिल की,
तो 11 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, रेड पॉइंट 117 है, यानी कि ट्रिपल डिजिट इनके पास रेड पॉइंट्स और रेड स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और बेहतर करते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में 8 पॉइंट उन्होंने प्राप्त किए थे। और ओवरऑल अगर टीम स्टेट्स की बात करें तो जर्सीज बिल्कुल आपने सही बताया कि बहुत लाजवाब है। 13 मुकाबले यहाँ पर खेले हैं पंचाला प्राइड ने, 4 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला टाई भी खेला है। और उनकी अगर हम फॉर्म की बात करें पंचाला प्राइड, आप इनसे और बेहतर प्रदर्शन देखना चाहेंगे क्योंकि पिछले 5 मुकाबलों में इन्हें जीत नसीब हुई नहीं है। नवीन, लगातार पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले हारे हैं और 1 टाई खेला है। Yeah, the coming out with a tie or a loss is not a right way to go for, because Maratha Marvels have lost 9 games of their 13. It will be Nikhil who will be staring him into the face and saying, okay, let's get this sorted, as Uday Dabas also trying to just flex up and just trying to see where that win will come in from. Their last match, very, very disappointing performance. Once again, they've been losing a lot of matches in the lead up to this must-win game. As we have set up the stage, let's go down to the countdown and see who will be there getting that 7th place after this match. Beautiful bit of designer wears also for the jerseys. Have been really nice to differentiate both the teams very, very equally. Now, I'll tell you something, Harshit, because it is that sort of a match that definitely Maratha Marvels will want to win. But also Panchala Pride on the other hand tries the dupki under the chain. No, does not get it. Right corner comes across, and that's a good beginning. Anubhav comes in very rightly there and gets the raider out. What a tackle that was. First up in the chain, and Anubhav along with the right in Nikhil has got it right. So if you're a defender, you need to be an ostrich, and if you're a raider, you need to be an octopus. That's what I keep saying. Because you know why, Harshit? Because the octopus has 3 hearts and ostrich has 3 stomachs. So you need to take a lot of point as a raider and you need to save a lot of points as a defender. क्या बात है, क्या खूबसूरती के साथ यहाँ पर आपने रिलेट किया है। 1 पॉइंट और चलिए मिलेगा। इस बार अरमान यहाँ पर गलती करते हुए नजर आएंगे और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। मराठा मार्वल्स के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। करंट फॉर्म उतना बेहतर रहा नहीं है पंचाला प्राइड का। पिछले 5 में से 1 भी मुकाबला जीत नहीं पाई है, जिसमें 1 टाई खेला है और लगातार 4 हार के साथ आ रही है। पॉइंट टेबल की हम बात कर रहे हैं, मराठा मार्वल्स देखिए नीचे पायदान पर मौजूद जरूर है, पर इस बार अच्छी शुरुआत करेंगे पंचाला प्राइड के लिए अमन राज। इनसे आप क्या राज करते हुए नजर आ सकते हैं? पंचाला प्राइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टच पॉइंट मिलेगा। Hey, was it Arman or Aman Raj is a question, because I just saw the number 7 on the jersey. We'll have to see what was actually happening in that raid. They're coming out with an official discussion. They just needed to see who was that 1 point that was been going to. And as you said, yeah, 2 more points. And all right, Panchala Pride, the defender somewhere making an error. Oh, Ankit Yadav, come on. That's not what you want to see from the skipper of Maratha Marvels. Not happening at all. Well, let's see what happened there. Benson goes in for the running hand touch, and there was no contention also for Ankit Yadav to be in the frame. What was he doing there in that left corner, stepping into the lobby? बिल्कुल वहां से ये थोड़ा सा एक अच्छी शुरुआत नहीं रही है। इसके पर के लिए पर एक बार फिर से उदय दबास एक बार पने तैयार है, राइट रेड के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। टो टच का प्रयास है क्या इस बार? बहुत ही खूबसूरती के साथ लेफ्ट कॉर्नर आदित्य कुमार को यहाँ पर अपना शिकार बनाया है। बहुत ही स्लाइट यहाँ पर टो टच किया, लगातार उसका प्रयास भी कर रहे थे। नवीन देखिए वहां पर सेटअप कर रहे थे, 2-3 बार प्रयास किया और बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ यहाँ पर टो टच किया है और एक बार पुनः अपनी टीम को लीड में लेकर गए हैं। अब प्रिंस राज पंचाला प्राइड से हमने इनके बारे में पिछले कई मुकाबलों में कई सारी बातें की है। नवीन, इस मुकाबले में देखना होगा ये किस तरह से शुरुआत करेंगे अपनी टीम के लिए। Starts the raid well, goes in for that right flank as an attack, and then gets the outward turn. Has to touch the midline. Don't forget that. You have to cross it. Not a right angle. Definitely not the way that you will want to put out a tackle there on manning that right corner. You were not the regular right corner. We agree that. But then when you've got that responsibility,
You'll have to make sure that comes across nicely. जी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हर डिफेंडर के लिए। और मराठा मार्वल्स वर्सेस पंचाला प्राइड, आप एक कड़ा मुकाबला देखना चाहते हैं दोनों के मध्य, दोनों ही टीमों के लिए, खासकर वहाँ पर मराठा मार्वल्स के लिए एक मस्ट विन गेम है। पंचाला प्राइड के पास क्या आगे मौके बनेंगे या फिर होंगे, इसके बारे में मुकाबले के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चर्चा बढ़ाते चले जाएंगे। पर इस बार आसानी के साथ एम्प्टी रेड के साथ मराठा मार्वल्स के रेडर कृष्ण कुमार यादव वापस आए। और पंचाला प्राइड के लिए प्रिंस राज, इनके बारे में हम ये बात कर रहे थे कि ये इनका स्टार्टिंग मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस खिलाड़ी के लिए। अभी तक अच्छी शुरुआत रही है, एक अच्छा पॉइंट लेकर आए थे पिछली दफ़ा जब रेड में गए थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग मोमेंटम जब इन्हें प्राप्त हो जाता है तो ये कई मायनों में खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। और अगर विपक्षी टीम का डिफेंस अगर इन्हें शुरुआती समय में धर लेता है, दबोच लेता है, तो ये थोड़ा सा अंडररेट हो जाते हैं। अब निखिल, नवीन ये देखते हैं किस तरह से रेड डालेंगे। Nikhil has to just keep on doing what he's done best for the Maratha Marvels, because every time you've seen what he's done so well. Once again escaping the clutches of the left cover and not the right way to go for it. Nishant Kumar just did not get the angle also right and gives away another point with both the covers going for it. Look at that. You should actually go for the dash, and as I always keep saying, Nikhil has got that one small pause, one small, I will not even call it a second. It is a frame. It's a small frame that he will pause himself and then dodges the defender. बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है टीम्स। इस पूरे युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में हमने देखा है कि जो टीम शुरुआत में एक पकड़ बनाती है, एक्सेप्ट मुर्थल मैग्नेट्स, क्योंकि मुर्थल मैग्नेट्स को मैंने देखा था एक मुकाबले पर। चले टीम मैनेजर की बात कर लेते हैं, टीम कोचर की हमने बात करते हैं। बहुत अहम रोल हो जाता है टीम कोचेज और टीम मैनेजर्स का, और उस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है युवा कबड्डी सीरीज़ की मॉनसून एडिशन में। अब देखना होगा, निखिल ने एक अच्छी शुरुआत प्राप्त की है अपनी टीम के लिए, अच्छी फॉर्म में है ये खिलाड़ी भी। पिछले मुकाबले में 8 पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए थे। टीम मुकाबला हारा जरूर था पर इनके प्रदर्शन से प्रशंसाजनक प्रदर्शन था। डू और डायरेक्ट आ गए नवीन, देखना होगा इसमें क्या करें पाएंगे यहाँ से प्रिंस राज। Yeah, he has a lot of opportunities. He can steal the bonus, he can attack the left flank, he can do it once again on the right. He's showing his footwork. Until now the defense is keeping it together. Maratha Marvels will have to keep it together. Right cover makes that error. Viru Yadav, how many times we've seen this? Right covers making that error, playing that high line defense, does not go back in time and gets an easy hand touch there. That time Prince Raj. और अब उदय दबास एक बार फिर से तैयार है, क्या यहाँ से पॉइंट ला पाएंगे, क्या यहाँ से पॉइंट लाते हुए नजर आ पाएंगे मराठा मार्वल्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त होगा वो पॉइंट। अरमान आज फिर से बतौर कप्तान उतनी अच्छी शुरुआत इनकी रही नहीं है। जिस तरह से आप एक अच्छी शुरुआत के साथ इनकी मांग करते हैं उस तरह की शुरुआत आज इनकी रही नहीं है। नवीन, चलिए 6-4 once again that confusion of whether you're a raider or a defender is again that is the call that you need to take. See now Aman Raj comes in, he just puts a proper raid, and Arman, you've been or rather claim you're a good defender when you're all-rounder or the tackle that you want to put in. When you went into raid, you've got points as a raider today, the skipper of Panchala Pride, and not in the crunch situations. See, when the lower place teams clash upon, there is a confusion. There is a confusion of how do you recognize who's the raider, who's the defender, for people watching and for themselves, even for the players. You know, people watching is of course the primary thing, but even before that, it's the players that they'll have to understand. And once again, putting out a false tackle. And Nikhil gets a running toe touch onto the left corner. Gets an easy point. और क्या यहाँ पर प्रिंस राज को अपना शिकार बनाया है, देखना होगा। जाते जाते क्या खूबसूरती के साथ देखिए ये इनके खिलाड़ी को, यानी कि लेफ्ट इनके खिलाड़ी को जैसे ही उन्होंने देखा कि इनका पैर ज्यादा पीछे गया नहीं है, बहुत अच्छा टो टच वहाँ पर करते हुए नजर आए प्रिंस राज, और एक बड़े रेडर को यहाँ पर बाहर किया है। और हमेशा विपक्षी टीम का रेडर ये देखता है कि अगेंस्ट टीम के बेस्ट रेडर को अगर आप डिफेंस करते समय आउट कर पाएं तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं। अमन राज और प्रिंस राज के रेड में हमें जोड़ी देखने को मिलती है पंचाला प्राइड के लिए। मराठा मार्वल्स में मुझे नवीन पिछले कुछ मुकाबलों से वो जुनून नजर आया है, अगर उनका डिफेंस कम गलतियां करता है तो इस मुकाबले में मुझे नजर आ रहा है कि मराठा मार्वल्स एक अच्छी जीत प्राप्त कर सकती है। पंचाला प्राइड के ऊपर भी यही बातें निर्णायक साबित हो सकती है। उनका डिफेंस भी लगातार
कई सेगमेंट्स तक गलती करता है। आज निशान जरूर पिछले कुछ मुकाबलों में पट्टी के साथ आ रहे थे, ये अच्छी संकेत है कि इस बार पट्टी उन्हें नहीं पहनी है। क्या एक एक्स्ट्रा अब अपना प्रदर्शन दर्शा पाएंगे निखिल? सिर्फ एम्प्टी रेट के साथ यहाँ पर वापसी करेंगे, समय ले रहे हैं। जो जानते हैं मोमेंटम इनके पक्ष में है, उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहेंगे। They've also got the lead, so they will also play on the clock very soon. And now it's a do-or-die raid. Time for Aman Raj to make sure that something will bring out this point against the Maratha Marvels, because Panchala Pride are trailing behind, and the footwork suggests that he will not go in too deep. And right corner tries his best, does not get the support. Anubhav put out a real mighty effort. Like as I said, it's an octopus sort of an effort. He's got a big heart there, Anubhav, and also big hands, but it cannot stop the super raid from Aman Raj. सुपर्बली इम्प्लीमेंटेड। देखिए जिस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छा कबड्डी का खेल यहाँ पर हमें देखने को मिला निखिल के हाथों से, जैसे वहां पर अमन राज के यहाँ पर पैर छूटे। अमन राज ने बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉडी को उस दिशा में दिखलाया जहां पर आप मिड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। अब देखना होगा यहाँ से क्या रिव्यू की मांग की गई है और किस खिलाड़ी द्वारा की गई है यहाँ पर मांग। अक्सर हम जी हाँ मराठा मार्वल्स की कप्तान शायद यहाँ पर रिव्यू की मांग करते हुए नजर आएंगे। आइए सुनते हैं कि क्या मांग की है। टीवी एम्पायर मराठा मार्वल की मांग है 2 पॉइंट्स, हमारा निर्णय था 3 पॉइंट्स। कृपया रिव्यू करें। They only said Anubhav and Nikhil got into the tangle. There was no left corner or the left cover defender that's coming. Yeah, that's Anubhav and Nikhil for sure. No doubt at all. The question is, did Ankit Yadav have his hands? Yeah, that is the big question. Looks like he did not have it. And if he had had his hand, that right leg of Aman Raj wouldn't have been left alone. Yeah, before he touches the midline there, crosses him over, and it's still Nikhil. And yes, I guess it's a very good review. Only 2 points, because Ankit Yadav did not touch Aman Raj. If he had gone in for the touch and then tried to control Aman Raj's lower half of the body, at least the thighs or the legs, the raid wouldn't have been successful. It would have been just a 2-point raid. But then that's the question now. Ankit Yadav is in question from the left corner. I felt he's not there, but let's see what the TV umpire has to decide finally. बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और देखिए अभी भी निर्णय यहाँ पर बनेगा किस तरह से, क्योंकि जो तीसरे खिलाड़ी का था वहां पर सफल रहा। बिल्कुल रिव्यू बराबर सफल रहता हुआ नजर आएगा, रिव्यू सफल रहता हुआ नजर आएगा, और एक अच्छा रिव्यू यहां से लेते हुए नजर आएंगे मराठा मार्वल्स। और रेफरी मुकेश जी कह भी देंगे कि चलिए आपका रिव्यू जारी रहेगा, आपका रिव्यू आप पुनः ले सकते हैं मराठा मार्वल्स। Yeah, that's what I said. See, when Ankit Yadav would have been involved in the tackle, it would have been a successful tackle. But then also somewhere Arav Yadav also tried to get into the tangle, and then it was a question between Ankit or Arav. Both of the Yadavs survived as Anubhav and Nikhil had to go out. Now Uday will have to revive Nikhil. Lovely bit of a jump over the chain, and 2 more points. That's a new skill by Uday that I'm watching. Jumping over the chain is not easy, and he had to do that in a fraction of a second. Both the covers blown off, and it's a monstrous of a raid in the situation of the match. बहुत ही क्लासिकल रेड यहाँ पर नजर आई। बिल्कुल आपने सही कहा कि अलग अलग स्किल्स इस युवा कबड्डी सीरीज के मॉनसून एडिशन में यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और खासकर भागते हुए और चेन के ऊपर से एक अच्छा यहाँ पर जंप लगाया। इसे आप फ्रॉक जंप नहीं कहेंगे, उसे आप रनिंग जंप के तौर पर वहां पर भागते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं वहां पर देखिए जिस तरह से डिफेंडर्स के कंधों का भी इस्तेमाल किया, वो वहां से फोर्स जनरेट किया और मिड लाइन को क्रॉस किया। अमन राज तो इस बार सिर्फ शायद यहाँ पर एम्प्टी रेड करते हुए नजर आएंगे। अब निखिल जाएंगे, 9-6 का स्कोर है। सब्स्टिट्यूशन उससे पहले हो जाएगा मराठा मार्वल्स के लिए। देखना हो कौन से खिलाड़ी को अंदर बुला रहे हैं। क्या गौतम तोमर अंदर आ सकते हैं? जी नहीं, वीरू यहाँ पर बाहर जाएंगे और शायद रोहित कुमार अंदर आएंगे, ये देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, रोहित कुमार अंदर आए, 21 नंबर जर्सी। Yeah, they have to strengthen that covers even more, because instead of Veeru Yadav, they feel Rohit is a better right cover. A good decision by Kiranpal Singh Saab. He knows that this also is a very important game for Maratha Marvels. They cannot let this go, because they have to win this and secure that 7th place currently and keep their hopes alive to go into that challenger round. So important for them to win this game is the Maratha Marvels. Yeah, that's what I said. That jump we were talking about. Let's compare that jump to ostrich.
That is what I say. The Raiders needs to be like an ostrich. They have to jump. They have to be hungry for points. An ostrich has 3 stomachs, so it's very hungry. And the defenders need to have big heart. They have to have hands and legs like octopus. Do not let go of the Raider. Cover up the Raider with how many ever possible tackles possible. Hands, necks, legs, and even back holds. Yeah, there we go. That's the ostrich sort of a jump. And today, even Maratha Marvels' jersey is looking like an ostrich color as well on the desert when the ostrich runs. That is what it is. It's a very, very good sort of a zoology class that I've gotten. But it compares well. It compares well. 3 stomachs for the ostrich. It's always hungry like the Raiders to take off more points. And octopus for defenders, because you need to have big heart. Because octopus has 3 hearts. And more than that, it has 8... tentacles to control its prey. Right, let's see. Maman Raj becomes an ostrich. No! He became a half ostrich there, but the octopuses nabbed him from that right corner. और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन किया है। देखिए डू और डाई रेड था और राइट कॉर्नर। आज ये खिलाड़ी बहुत सारा अनुभव शायद यहाँ पर अपनी टीम में लेता हुआ नजर आएगा। अनुभव राठी यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कॉर्नर के खिलाड़ी से। और एक और डू और डाई रेड, सुपर टैकल का मौका है पंचाला प्राइड के पास। अरमान मौजूद है, आदित्य शायद वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे और अंकित मौजूद मिलेंगे। देखना होगा यहाँ से क्या यहाँ पर निखिल ने शिकार बनाया है। कह रहे हैं कि भाई मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। डू और डाई रेड है निखिल, क्या एक और प्रयास करना चाहेंगे? जिन्हें शायद पूरा कॉन्फिडेंस है और बोल रहे हैं भाई सुन लो क्या कह रहे हैं रेफरीज। और मुकेश जी साहब ने कह दिया कि बिल्कुल आप 1 पॉइंट प्राप्त करें। देखना होगा यहाँ से क्या अरमान को शिकार बनाया है। No, that's Arman again, Harshit. Again, Arman, who's confused whether he is the left corner, whether he is a raider, whether he is a left cover defender, whether he has to go back, and that is why so many substitutions are also happening in the Panchala Pride's outlet. You have Sandeep Kumar coming in instead of Aditya Kumar. So somewhere you need to understand. First, do your basic skills right, and then when you're doing your skills really 100% right, or I will say 120% with such a competitive kabaddi being played, and then you think about assisting the team in other departments. Running hand touch once again, and Anubhav, who's been doing so very well in the right corner, will go out on the bench for the first time. And always Ankit Yadav is the one who takes the brunt of getting the green card. ठीक है, बतौर कप्तान शायद अपने भावनाओं पर यहाँ पर काबू रख पाते नहीं है। इस बार जरूर 1 पॉइंट यहाँ से प्राप्त किया। और नवीन, मेरे सर्वश्रेष्ठ रेडर हैं पंचाला प्राइड से संदीप कुमार। इन्हें कई बार हमने पिछले कई मुकाबलों में से देखा है कि स्टार्टिंग 7 में मौका मिलता नहीं है। इस बार जरूर शायद कुछ मांग यहाँ पर करने जा रहे हैं, देखना होगा। पर संदीप की बात मैं इसलिए भी इतनी ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि उनका भी उपयोग शुरुआत में पंचाला प्राइड ने कॉर्नर के तौर पर किया, पर मैं उन्हें बतौर प्रॉपर रेडर देखना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अभी तक, आप भी जैसे इस मुकाबले में आगे चलते समय देखेंगे, अभी तो सब्सिट्यूट होकर आकर शायद अपनी टीम को एक मौका दिलाया है। और मौका क्या पहुंचेगा पंचाला प्राइड इस ट्रॉफी के करीब? क्या अगले राउंड में जा पाएगा? Wait, Harshit, wait. Don't jump stories. Wait, you spoke about Sandeep Kumar. Okay, right. So when you speak more about him, just try and give me more information. Why did you feel that he's a good raider? एग्जैक्टली, चलिए धीरे धीरे जिस तरह से हमने बताया कि उनके पास एक बहुत अच्छी स्किल्स है, बहुत तेजी के साथ वो हैंड टचेस करते हैं। और अब तो चलिए उसी की तेजी उदय में भी आती है। इस रेड के बाद हम और थोड़ी सी उस वार्तालाप पर जाते हुए नजर आएंगे क्योंकि सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल का मौका है, वहां पर मौजूद है। पर संदीप रेड डालने का मौका उन्हें मिलेगा ही नहीं, सेल्फ आउट हो जाएंगे बाहर और इस रेड में 3 पॉइंट मिल जाएंगे उदय दबास को। This is just crumbling down for the Panchala Pride. Never expected, and I had high hopes even on Sandeep because Harshit, you explained it really well. Because I really wanted to see Sandeep in raiding, and then he stepped out of the end line, and then even if Prince Raj was laying down flat on the mat, Uday just got a toe touch onto him. That's a only 2-point raid, and one also the all-out been inflicted. And now Kiran Pal Singh will feel that he's got a control. Let's listen to him. अगर तू उसकी टांग पकड़ लेता तो नहीं जाती सेंटर लाइन तक, समझ रहा, अलर्ट नहीं था तू। वो पहले ही पॉइंट जिस चैन इतनी बढ़िया लगी वो लात निकाल गया। तू खड़ा देख रहा है, पीछे उस पर डीप कॉर्नर पर मार रहा है। आरो हाँ, पीछे चल दे, तू कॉर्नर है यार, क्या डर है, मार भाई जो खींच के दाब को बाहर जाएगा। आगे से जब भीतर डीप मार रहा है, पैर में बैठ जा तू, वही ये आएंगे पीछे से, ध्यान रखना।
ओहो नवीन, Harshit, you want to take जिस that? तरह से आपने कहा था ना कि अगर वहां पर आरव या साथी खिलाड़ी अगर उस लेग को रोक लेते, और बिल्कुल आप ही की भाषा से थोड़ी सी अलग भाषा कोच की थी, पर उन्होंने बिल्कुल एक बात कही है, उद्देश्य दोनों का ही एक था कि अगर वहां से डिफेंडर पकड़ लेते, अगर अपना हाथ वहां से लगा देते तो शायद वो एक रेड पॉइंट नहीं मिल पाते। कुछ पंचाला प्राइड को 2 पॉइंट शायद वो मिले थे, प्रिंस राज या अमन राज में से कोई खिलाड़ी थे। अब यहाँ पर प्रिंस राज जरूर है, अब यहाँ पर प्रिंस राज है, नंबर 10 जर्सी। तो क्या बात है नवीन, पहले सिर्फ आपकी बात खिलाड़ियों तक पहुंचती थी, क्या अब आप और इंप्रूव कर कर कोचेस तक भी आपकी बात पहुंचा रहे हैं? No, it's just as I said, it's the kabaddi bat that is the biggest chip that we have for connecting. And today it's the connection that's worked with Uday Dabas. Can he put it out? Oh, combination tackle came across nicely. Very strong left corner that is followed on. And that has to be, I think, Aditya Kumar there. There we go. Arman. Come on, Arman. You're a very good defender. Don't listen to Harshit. देखिए एक बार अच्छा प्रदर्शन नजर आया अरमान द्वारा, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही बात की थी, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे अरमान अपने स्किल्स के साथ। संदीप इस बार ये प्रदर्शन एक और बार अच्छा कर दिखाते हुए किस खिलाड़ी को शिकार बनाया है? क्या रोहित वहां से कवर के खिलाड़ी मौजूद थे, क्या उन्हें अपना शिकार बनाया है? देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, रोहित राइट कवर के खिलाड़ी, बिल्कुल स्लाइट यहाँ पर टच नजर आया, और अब निखिल यहाँ से लेफ्ट रेड करते हुए नजर आएंगे आपको स्क्रीन पर। Yeah, in those replays, what we'll have to really concentrate on is the skills that has been exhibited. You know, we know that the right cover is gone there, and then what was very good with Sandeep is his running hand touches, his speediness, his pacey running across the mat, and that is an impressive skill. I am watching Sandeep for the first raid in this monsoon edition. Of course, you've been lucky, Arshit, watching him more and more, but nice to see Sandeep having a light-footed running approach. It's really nice, and he has to be very, very good compliment provider for Prince Raj. He has to provide very good support. Comes in with a dash, pushes off the defender, turns the pages across Prince Raj, and goes back very comfortably. 28 out. बिल्कुल पुस्तक के पन्नों की तरह यहाँ पर पलट दिया था, ऐसा नजर आया। अनुभव को कहा था कोच साहब ने कि आप जाकर वहां पर टांगों पर जाइएगा। इस बार डैश और फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास था, चेन का वहां पर कोई तुक बना नहीं था, बिल्कुल बहुत ज्यादा गैप मिल जाता है, तो ये बात जरूर डिफेंडर्स को ध्यान रखना होता है। दोनों से खिलाड़ी अक्सर इसमें बेहतर होते हैं। दोनों चीज कैसे कर सकते हैं हर्षित? ब्लॉक और डैश का प्रयास, that itself shows it's a dual hearted, you know? Yes. So that is where it has to be very, very sure. That's why I say defenders need to be like octopus. Octopus does not, have, even though it has 3 hearts, it does one decision, saying I want to nab it, I want to grab it, that's it. And you cannot escape of the octopus's clutches. You need to have that going from the defenders. That is what will make you a really good defender. As Maratha Marvels now get their do-or-die raid, Nikhil now, do you really think if Panchala Pride can hold themselves back, they will be really in a very good chance to inflict the all-out? बिल्कुल एक बहुत अच्छा मौका है, मौके को बुनाना होगा, मौके को बुनाना होगा, और अंकित ने शुरुआत कर दी है। हालांकि थोड़ा सा एडवांस क्या नजर आ रहा था, टैकल पर सही समय पर समर्थन देखने को मिला है, सही समय पर समर्थन देखने को मिला है, और 1 पॉइंट यहाँ पर पंचाला प्राइड। आप बात ही कर रहे थे नवीन अभी, पर इससे पहले देखते हैं आदित्य कुमार there actually going in for that diving ankle holds, and then what actually happened there was the covers. Even the covers, and then I will say the third line of defense, not the second line, the third line of defense came in, and that was Ankit Yadav not trying to do too much there in the super tackle situation. He has to understand that the all-out, as I said, Harshit, if somewhere Nikhil can be pinned down, Panchala Pride can inflict the all-out. It's a very good opportunity now for them. बिल्कुल 100% सही कहना है आपका। अगर निखिल वहां पर मौजूद नहीं है, आपके लिए वहां पर मौजूद नहीं है रेडर्स का खेमा, तो आप आसानी के साथ यहां पर जा सकते हैं। उदय भी बाहर की तरफ बैठे हैं, देखना होगा अब यहां पर कौन जाते हुए नजर आएंगे। कृष्ण जरूर है, पर किस तरह से कितना अंदर जाने का प्रयास करना चाहेंगे? लगेगा कि सिर्फ शायद एम्प्टी रेड करते हुए, या फिर क्या प्रयास करना चाहेंगे बोनस का, क्या थोड़ा सा डीप जाना चाहेंगे? देखना होगा। कवर और कॉर्नर के कॉम्बिनेशन को सिर्फ चहलकदमी की है, और वापस एम्प्टी रेड कर वापस आ जाएंगे। यानी कि थोड़ा सा डिफेंस आपको मराठा मार्वल्स चाहेगा कि वहां से सुपर टैकल करें, खिलाड़ी को अंदर बुलाएं। ओहो, डू और डाई रेड आ रही है। अरमान थोड़ा सा फेस पर शायद स्क्रैच जरूर आया है, नाखून शायद लगे होंगे, पर नाखूनों की तरह कुरेदना चाहता है ये खिलाड़ी। अंकित को शिकार बनाया होगा, और देखते हैं इतनी जल्दी नवीन बड़ी आसानी से पॉइंट प्राप्त कर लिया है डू और डाई रेड में।
Yeah, absolutely. And now he is turning out to be that one important aspect for Panchala Pride in making sure the skipper is get some treatment there first on the face. I think yes, there is some nails that's been scratched his cheek. No problem. But we have our physio partners UEM. They will take care of Arman. But Ankit Yadav, for the first time, he attempted that dash from behind of Arman, and then he was unsuccessful because Arman turned very quickly. And being a right raider, he turned across to be the left and got his running hand touch onto the skipper. और Ankit नवीन, Yadav. मेरा That's एक और it. प्रश्न रहेगा आपसे। Yeah. देखिए, क्या जब सोलो खिलाड़ी होते हैं, हालांकि यहाँ पर जिस तरह से अरमान आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जब सोलो खिलाड़ी होते हैं, कोई भी डिफेंडर चेन में नहीं होता है, तो और थोड़ा सा मुश्किल होता होगा अपने आप को रिट्रीव करना, क्योंकि जब आप चेन में होते हैं आपके पास ज्यादा बैलेंस होता है, ज्यादा आपको शक्ति मिलती है। और क्या भी एक वजह हो सकती है कि अंकित यादव सही समय पर पीछे नहीं हो पाए या फिर अपना एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा पाए पीछे होने में। The one thing that was a shocking move for Ankit Yadav is the turn of Arman. That is what shocked him, and we'll come back to that chain tackle situation. It's a very good point that to discuss out. But now Gautam Toma, he saved the Maratha Marvel so many times. He was in the starting seven, but now diving ankle hold by Arman once again. The bandage on the left cheek is creating wonders. Yeah, there we go. He's just making sure that stays in its place, and the all-out has been inflicted on the Maratha Marvels by Panchala Pride. This is the very, very wrong time for the team that has to win this game to get into the all-out so soon. Are we out? Are we out of time? Yeah, we are out of time. I just said, surrender raid and it will be an all-out. But then, coming back in the second half, it will be all over and done and dusted with. But yes, coming back to the chain tackle situation, it's very easy, of course, for a single person to go back. But in the chain, what happens is, again, you will have to coordinate well. You'll have to see who's holding the hand. It should be the defender that is getting the control of the movement, and then he protects the raider or the in defender. But that is how the coordination should be like. But currently, Maratha Marvels leading this by more raid points than the tackle points, and an all-out has been inflicted. But Panchala Pride will come back very soon. It will be 16-all in the first second of the second half. After that, we have 20 more minutes to go. We'll come back soon with that. Stick with us. Welcome back, everybody, to this fabulous game where both the teams are actually trying their level best to make this happen. And I just said we will come back with the surrender rate, but it's going to be Uday Tapas who's not surrendered at all. 7 raids that's been put in, 7 raid points, and he's given 100% today for the Maratha Marvels, where they have to win this game against the Panchala Pride. And Uday is making sure that he earned his place. Well, I love this jump. This was the raid of the match for me until now in this game. And then he also inflicted that all-important all-out. But Harshit, I was just telling, in the second half it's going to be a surrender raid, but no. Somewhere, the Maratha Marvels will have an opportunity to raid first, because the Panchala Pride had won the toss and asked the Maratha Marvels to somewhere raid in, and then the second half, it's going to be that one raider now will be getting the opportunity to come and raid back. How could we forget that? So it's not the surrender raid that's going to happen. It will be a very big chance now for the Panchala Pride to make sure the tackle attempt is very correct. But Maratha Marvels can come back into this game with this man on screen. He can really save the team. A left raider will probably come in. बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और हमारे दर्शकों को इसी के साथ बता दें कि ये होता है महत्व
टॉस का सिक्का उछलने का कई सारे लोग यहाँ पर बात करते हैं, पर चलिए उदित यहाँ पर तैयार है। उदित यादव को मिला है मौका और ये मौका एक असल उदाहरण बना रहा है कि टॉस का कितना ज्यादा महत्व हो जाता है। निशांत अपने निश्चल प्रदर्शन से थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, इस बार आसानी के साथ शिकार बनाया जाएगा। उदित रिट्रीव नहीं कर पाए इस समय पर निशांत, और उदित को मिल जाएगा एक अच्छा रिवाइवल और यहां से उदय हो सकता है टीम का। द यू फैक्टर ऑफ उदित एंड उदय क्या काम कर देगा अपनी टीम मराठा मार्वल्स के लिए। Has to. Oh, but then both the U's have been slashed out by the A, and Arman is just having the Armans of Panchala Pride, putting it one against the Maratha Marvels in this match. He's done it again, and he's got Udit on that time. But as I said, very rightly pointed, the toss is a very, very important thing. Sometimes we don't get the opportunity to explain it out, how important the toss will be, but this is a classic example. If you win the toss, and why do you select the court, is just because in the second half you will get the first opportunity to raid, and also double angle hold coming in from Arman, and now I will start to believe, Harshit, that Arman is a very good all-rounder in the making. Even though with the bandaged face there, he's done it well. Once again, a diving ankle hold on Uday, who's done very, very well today. All out been inflicted on the Maratha Marvels, and now Panchala Pride really have a very good chance to make a comeback. And that's not looking good for the boys in orange. Yeah, I was just telling you about the toss. One, of course, in the second half, you will probably get that first raid opportunity, and you can save yourself from the all-out at least for a couple of raids. But then the other most important thing is, as Gautam Tomo goes out and Aravyada comes in, the other important thing is the do or die raid will come to the opposition first, because the opposition is raiding first. And if there are a couple of empty raids in the beginning, the do or die raid will be inflicted to the opposition. So it is so important to win the toss and select the court during any kabaddi match. Exactly. और इसी के बीच में एक और पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। संदीप वहां पर मौजूद थे, 11 नंबर जर्सी, और इनकी खेल की हम लगातार बात कर रहे थे, और संदीप अब थोड़ा सा प्रभावित करते हुए यहाँ पर नजर आया, और 18-18 का स्कोर हो जाएगा नवीन इसी के साथ। पंचाला प्राइड और मराठा मार्वल्स, जहां पर एक समय लीड बहुत ज्यादा बड़ी बना ली थी मराठा मार्वल्स ने, पंचाला प्राइड ने वापसी की है और बड़ा तभी हासिल कर लेंगी। यहाँ पर कवर कॉर्नर कॉम्बिनेशन नजर आएगा, नहीं कर पाएगी। बोनस मिला है, फिर से इवन स्कोर मिलेगा, बोनस मिलता हुआ। Right cover there. Look at that. Very strong. Goes to the midriff, Satyam Singh, and says, okay, let me squeeze out whatever Uday had in his belly to reach the midline. So it did well. Really nice. No two-hearted attempts. Goes in and pushes him out. Now Prince Raj should understand that Panchala Pride have made a big comeback into this game. And they have put the Maratha Marvels, and somewhere Ankit Yadav should be really careful near the end line. He's always stepped out a couple of occasions, and now he escapes that. So what will Maratha Marvels do? See, I understand they have to win this game, but even equally important for Panchala Pride to win this game and hold on to that 7th spot. So this is a very, very good example of these lower placed teams fighting it out tooth and nail, and we do not have anything to pick, even with just 16 and a half minutes left in this match, 19 all. They have to take this down to the last second of the game, both the teams. Arman, you can do raid so very well. Why do you have to waste your energy in that not so important pursuit? He's got it, is it? It looks like he's got it, or is feeling a little disappointed. I don't think so. He's got it. Yeah, that is a disappointment. You put in so much effort with the pursuit to chase Nikhil back, and then when you do not get anything, you need to grasp for breath, just take your energy back and come back. जी, इस बार बहुत अच्छा प्रयास किया था वहां से। हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि क्यों इसकी आवश्यकता थी परसूट, और वो भी आसानी के साथ। उदित अब आएंगे, उदित अब यहाँ पर आएंगे, क्या सेल्फ आउट लॉबी में जाने ही वाले थे, पर अच्छी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया सही समय पर। उदित देखना होगा, जब पिछली बार रेड के लिए आए थे, अपनी टीम को एक रिवाइवल दिलाया था जब ऑल आउट की परिस्थिति में टीम थी। अब प्रिंस राज को यहाँ पर मौका मिलेगा, एम्प्टी रेड पिछली थी, अब एक न एक टीम यहाँ से शायद लीड में जा सकता है। प्रिंस राज आएंगे, 19-19 का स्कोर है, डू और डाई रेड है, अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए कप्तान। Dashed out. Oh, no, the counting man probably
Maratha Marvels will want to take the review. Probably they want to take the review, or will they be happy with the referee's decision? And it is Ankit Yadav in contention. Look at that. He took a little more time. He paused it for a while and then went for the dash. Oh, they're not going for the review. Is it? They could have. They should see and rectify that or revive that and see if it was a good dash. I felt he took a little more time. Let's listen what the review is all about. Yeah, simple. टीवी एम्पायर मराठा मार्बल की मांग है रेडर आउट हमारा निर्णय था 2 पॉइंट्स 1 सेल्फ डिसीजन एंड टच आउट प्लीज रिव्यू करिए Oh, one defender also is self out is a big question. Is that Ankit Yadav? Oh my God! I was just telling you. Now Ankit Yadav cannot participate in the tackle. Even if the dash is successful, the dash is very successful. Dash is very successful. Ankit Yadav is a tall defender. He has to understand where the end line is. I was just telling in the previous raid that Ankit Yadav should be very careful of the end line, and he stepped out. Now this is going the Panchala Pride. Raj, you are safe, and the confirmation will come in from the TV umpire for sure, because if Ankit Yadav is stepped out of the end line, he cannot participate in the tackle, and the dash actually came in from Ankit Yadav. So it's only one way this is going, Harshit. बिल्कुल आपने सही कहा कि अंकित यादव का डैश बहुत अच्छा था और उन्होंने यहाँ से डैश किया, जरूर था, हवा में थे, लॉबी में शायद कोई कनेक्शन था नहीं, पर वहाँ पर क्योंकि अंकित यादव ने अपनी जो एंड लाइन थी उसे क्रॉस कर दिया था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ पर आप उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते नहीं है टैकल्स में। हालांकि अभी भी यहाँ पर निर्णय यहाँ पर रिव्यू में है, देखना होगा, अभी भी अंतिम निर्णय आना शेष है कि और किसी खिलाड़ी को भी यहाँ पर टच किया था, क्योंकि शायद 2 पॉइंट कह रहे थे वहाँ से रेफरी। No. Yeah, it will be 1 point or rather 2 points. But the decision was right. Panchala Pride will save Prince Raj. They save him because if the defender is gone outside the end line, you can allow him to do the dash. So looking at the dash, whether he's crossed the midline or no, it doesn't even come into contention. But I wonder what the TV umpire is thinking. And probably decision coming now. Yeah. 2 point Panchala Very good decision. Very good. As we said, Ankit Yadav stepped out of the end line. You cannot participate in the tackle. And Prince Raj gets a touch onto the right corner. So Anubhav and Ankit, both of them blown off. They have to go. The corners are not there. What an important raid, Harshit. That was by Prince Raj. It was a Maharaja of a raid, not just a Prince or Raj. अरमान हेल्पर को ध्यान से रखना, ठीक है? हमेशा वो हेल्पर को मारता है। Very nicely said by Rohit Kumar. What is helper is the किसी भी हाल में that is called the helper. अंकित And Arman has got a very clear instructions to save the right end. दबा, रेड कवर को दबा, जोन से भी देखता है उसे मार दी, पटाक दी। पैर का ध्यान रखना, ज़्यादा देर कॉर्नर पे जमोगे तो पैर पे सिस्ट लेके बैठ जाता है, नहीं मार देता। Right, Kiranpal Singh Saab says to Udit that do not spend too much time in front of Arman. So both the coaches trying to point out that left corner. This is very, very important. Nikhil comes in for a do or die right now. यानी कि एक और बार मौका बन सकता है। पंचाला प्राइड यहाँ पर बोनस का प्रयास किया है निखिल ने, जरूर शायद ऐसा नजर आया कि अंकित ज्यादा प्रयास उन्होंने किया नहीं, बोनस आसानी के शायद क्या दे दिया है या फिर इतने कॉन्फिडेंस लगे नहीं है बोनस में, और शायद दूसरी बार अटेम्प्ट किया डू और डाई रेड में। अब 10 से कम समय सेकंड का शेष रह जाएगा। निशांत, क्यों आपको ये करने की आवश्यकता थी? कब आप अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए नजर आएंगे? ये क्या बात है, यानी कि बोनस के साथ 2 टच पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। सुपर रेड यहाँ पर लगाते हुए नजर आएंगे मराठा मार्वल्स के। That is left cover going off, and then the jump of Arman did not save him over the raider. I would have wanted Arman to go for the review that occasion, because Arman is a very, very good player for Panchala Pride. He has to control it, but he couldn't. There is some touch and he's gone back. The jump, I just felt in the first instance that the jump saved Arman, but no. But what a raid by Nikhil. He's once again brought the match right back to the Maratha Marvels, and the defense should understand this. Rohit Kumar, he has to understand that the Raiders can only win you war. If you want to win the battle, it's the defense.
एग्जैक्टली और हमने पिछले सीजन भी यही देखा है ना, मुरथल मैग्नेट्स अगर उस सीजन को जीता है तो रेडर्स के साथ साथ उनके पास अदर डिफेंडर्स मौजूद थे, चाहे हम कृषल धुन की बात करें या फिर हम बात करें मनीष की या फिर हम नवीन की बात करें। पर यहाँ पर आप बात करना चाहेंगे पंचाला प्राइड की डिफेंस की। पंचाला प्राइड का डिफेंस भी एकजुट होकर खेलना चाहेगा। इंडिविजुअल खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, अरमान अच्छा प्रदर्शन किया है, अंकित क्या इस बार फिर से शिकार बनाया है यहाँ पर उदय दबाज ने, एक बार क्या फिर से एक और सुपर रेड बोनस के साथ 2 और टच पॉइंट, 2 और टच पॉइंट यहाँ से मराठा मार्वल्स ले जाएगा। 2 रेड्स और लगातार सुपर रेड्स और शायद इसी के साथ उदय अपना सुपर 10 भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। Yeah, the kick that came into effect, the half kick because of the ankle hold was not right. And see the difference if Arman is not there in that left corner, what is happening? And when you talk about all-rounders, now I will surely shout the voice out of my throat and say, yes, Arman is a very good all-rounder. Now you need to have people like them. He's reminding me of Ankit. Arman is really reminding me of Ankit. Very good skills when it comes to those tackling points and very good skills when he's raiding. Now that is a very good position for an all-rounder. Now these are the things that people like Arjun Chaudhary should understand, you know, when he's claiming to be an all-rounder. That is what I was just trying to tell. You can be an all-rounder, but you need to perform. You need to perform at that level for everybody to accept and believe that yeah, you can do both the skills equally well. एग्जैक्टली और चलिए इस मुकाबले में एक बार फिर से इस मुकाबले में लगातार हमें उलटफेर होते हुए नजर आए, लगातार बदलाव होते हुए नजर आए आपको पॉइंट्स टेबल में। पहले मराठा मार्वल्स आगे था, उसके बाद पंचाला प्राइड आगे गया, अब एक बार पुनः मराठा मार्वल्स आगे है और क्या एक बार फिर से पंचाला प्राइड बराबरी कर सकता है। 2 पॉइंट तो निश्चित तौर पर है, क्या लगा एक ही पॉइंट प्राप्त किया है। जी हाँ, बच गए थे वहां पर शायद। What is the wrong that Anubhav is done in the second half? What happened to him? He looked like a very strong runner to me in the first half, and then now he's looking very ordinary there from that right corner. He's done it 3 times in the second half. Does not get the right angle. He's confused whether he has to block or dash the defender. Come on, for a corner defender there is no dash. Take that away. You cannot dash from the corner, even if you are a Hulk in the defense. You just can't do it. As Uday has got a super 10, as you said, Arshit. Even if you've got the the speed of Iron Man or even the strength of Hulk, you cannot dash out from a corner. It's very tough sometimes. So it is definitely the blocks, definitely those double ankle holds, double thigh holds. That is what is important. As Udit comes in for another do-or-die raid. This is what the corner skills should be. Lovely diving ankle hold. That is now all important respect and all important good skills by Ankit Singh. और पीठ भी थपथपाते हुए वहां पर नजर आए कप्तान, ये देखिएगा बढ़िया भाई अंकित, ऐसा ही प्रदर्शन हमें तुझसे चाहिए। पिछले मुकाबलों में ये अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, अच्छे मोमेंटम में नजर नहीं आ रहे थे, पर इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए अच्छा करने का इन्होंने प्रयास किया है और पंचाला प्राइड जानती है जितना अहम मुकाबला ये मराठा मार्वल्स के लिए है उतना ही पंचाला प्राइड के लिए भी है। प्रिंस राज ने अपनी शानदार स्किल्स यहाँ पर शो की है। नवीन देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर मल्टी स्किल्स शो करते हुए नजर आए प्रिंस राज, ये इनके लिए मुकाबला अच्छा रहा है। पिछले कुछ मुकाबले he went in for that stretching right hand touch and then the right corner came across and then he just turned the pages away. So that shows the multi skills that you're talking about really needed. यस, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने उन मल्टी स्किल्स को बताया। अब निखिल बोनस बड़ी आसानी के साथ दे दिया है, कहेंगे बोनस मिल जाएगा। निशांत लगातार उन्हें शिकार बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, शायद क्या पहले टच किया है या फिर एंड लाइन को पार किया है। बोनस प्लस 1 पॉइंट। इन बातों से यहाँ पर सीखना होगा पंचाला प्राइड को। और नवीन देखिए जहां तक that's been given as that's been given as the hand touch. The left corner and the left cover not working well. The left corner very strong for Panchala Pride, and now Arman has come in on a super tackle situation. He should understand that he should get one. Yeah, very nicely done. Targets Nikhil, pushes him out, and now there is a chance to target Uday as well. He does it. He is a very good all-rounder. Everybody who wants to be an all-rounder, or rather claims to be, watch this guy. Watch this guy. He is my man if you are really terming and branding somebody as an all-rounder.
और उदय दबास को मुझे नजर आया नवीन यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सुपर 10 लगा चुके हैं रेड में और उनकी स्ट्राइक रेट देखिए 10 रेड में वो 12 पॉइंट लाए थे जब हमें स्टेट्स शो हुए थे, तो उन्हें ये करने की आवश्यकता नहीं थी। अब तो जरूर आपको सब्सिट्यूट होता हुआ नजर आएगा। खिलाड़ी गौतम तोमर अंदर आएंगे। 28-27 का स्कोर है। रोहित कुमार बाहर गए हैं, गौतम तोमर को मिलेगा मौका। सब्सिट्यूशन किया है और यहाँ से अब रिवाइवल की मांग करनी होगी। रिवाइवल चाहेंगे गौतम तोमर, कितना अंदर जाने का प्रयास करेंगे और अंदर आने का निमंत्रण देगा पंचाला प्राइड। कवर्स को गलती नहीं करनी होगी, कॉर्नर को गलती नहीं करनी होगी। अरमान थोड़ा सा शायद इस बार आप जल्दबाजी क्या करते हुए नजर आए। बोनस प्लस 2 पॉइंट, बोनस प्लस 2 पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा और अरमान शायद रिव्यू की मांग कर रहे हैं। जरूर उनसे let's see what happened there. Arman went in for the dash after Gautam Tomar and attempted the bonus. Bonus was given, and then Arman was actually very late. See, even though you are the very good defender or very good all-rounder, you cannot dash from the corners. Very tough. टीवी एम्पायर पंचाला प्राइड की मांग है। रेडर आउट, हमारा निर्णय था बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। कृपया रिव्यू करें। Where Gautam Tomar actually lost a few important frames is in the turn. He went in with the running bonus on the right, and then he turned. He turned to anti-block Arman, and he's crossed it. He's crossed it with the left leg inside the lobby. So Arman's review probably will not go towards the Panchala Pride's way, is what I'm thinking. But let the TV umpire make a final call. But as I keep saying, it's not the corners for the dash, Harshit. It should be the covers. बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां तक अरमान के खेल को हमने देखा है, आपने भी नवीन इस मुकाबले में देखा होगा, उनकी ताकत है डाइविंग लेग होल्ड करना, डाइविंग एंकल होल्ड करना, डाइविंग डबल थाई होल्ड करना। पर मुझे क्या नजर आया कि क्या थोड़ा सा एक पैर क्या हवा में भी था, देखना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे रेफरीज इस निर्णय को एक बार चेक करना चाहते हैं। Arman is a tall, lanky player. He's slim, he's tall. So, as I said, it's another super rate. You cannot dash from the corner, guys. You need to get the kabaddi skills very, very correctly into your skin. Look at that. Even though you're the best all-rounder that I've been really accepting for, Arman, I'm sorry. You have to go out along with Vishal Kumar. And that is the raid. I think now for Gautam Tomar, he has saved Maratha Marvels in this game. It's a super raid. 3 super raids for Maratha Marvels in the second half. Harshit suggests that Panchala Pride's defense is quite getting vulnerable. And all the 3 times, Arman was not on the court. And a super tackle now. Goes in for the ankle. Gautam Tomar gets 2 points and says, Prince Raj, let me have my Raj now. देखिए इस बार बिल्कुल जैसे प्रिंस राज उनके पास वहां पर जाते हुए नजर आए थे और दर्शा रहे हैं यहाँ पर। और नवीन यहाँ पर जरूर शायद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हुआ है, उससे पहले हम कोच की बात सुने। चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं किरण पाल सिंह जी। किसी भी हालत में कैच नहीं खानी, वो आगे टूटेंगे, वो आगे आएंगे जबरदस्ती। तुम हल्का भी रिक्स लोगे ना, सुनो हल्का रिक्स लोगे, हल्का तो वो सोचेंगे अंदर जा रहा है, अंदर जाओगे नहीं, वो पैरों में पड़ी रहे तुम भैया। भाई जब कॉर्नर पे इतना भीतर बढ़ के मार रहा है तो बेटा ड्राइव मार दे, इसमें क्या सी फारसी की आदत। जब आउट होना हो रहा है और वो भीतर टच ही करते जाए तो पैर पे कूद जा बेटा, थोड़ा कंट्रोल। निक्कू, very very good point being told by him. I'll tell what Rohit Kumar is trying to say. There is confusion there. There is confusion. The players want something else. टूटना नहीं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर पूरा ट्राई करता है मार दे। Ankit Singh is very, very unhappy with the defensive coordination. Yeah, why not? Why not? But what Kiran Pal Saab said is very nice words. He said, Ankit Yadav, when somebody is playing in front of you so well inside, why are you not jumping out? Why are you not putting the diving ankle holds? And then he said to Udit very clearly, touch nahi khana, catch nahi hona. Simple. If they are asking you to come inside, don't go too much inside and just waste the time. Don't get tackled. That's what he said. And then Gautam Tomar will have to see what he does. Ankit Singh looked really unhappy, Harshit. बिल्कुल अंकित सिंह ने कहा कि थोड़ा सा जिस तरह से उनकी बातों से ऐसा लगा कि कहना चाहते हैं कि भाई डिफेंडर्स अपने लिए मत खेलो, टीम के लिए खेलो। और इस बात पे मुझे एक बात तो ये याद आती है नवीन कि हर खिलाड़ी
की ताकत होती है उसकी टीम, जिस प्रकार से हर टीम की ताकत होती है उसके खिलाड़ी, तो हर एक खिलाड़ी की ताकत होती है उसकी टीम, तो आपको टीम की तरह खेलना बहुत आवश्यक हो जाता है। और संदीप एक बार फिर से, संदीप एक बार फिर से नवीन जिस तरह से अपना प्रदर्शन दर्शा रहे हैं, ये प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं, ये प्रशंसा के पात्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। Yeah, Anubhav has not got the touch and Anubhav of the first half. Something has gone really wrong to him in the second half, and that is not very good news for the Maratha Marvels. Now they've been reduced to only 2 men on court as Gautam Tomar is raiding now. He has to get a touch point. He has to revive somebody because you cannot be, getting succumbed to another all-out, and Panchala Pride will come right back into this game. Gautam Tomar has to try it on this raid, or else it's going to get tough. He suggests, I think he believes in a super tackle. Sandeep runs in, goes out. और वहां पर थोड़ा सा एक अलग कॉम्बिनेशन से नजर आया। निशांत लेफ्ट कॉर्नर में पहले अकेले खड़े थे, अब जरूर वहां पर चेन में नजर आएंगे संदीप के साथ। अरमान वहां पर मिड में अकेले खड़े हुए शायद नजर आएंगे। देखना होगा क्या निशांत को शिकार बनाया है। उदित वहां पर शायद रेडर थे और जाते जाते यहाँ पर निशांत को बहुत ही शानदार तरीके के साथ और लगातार चौथी से पांचवी बार यहाँ पर बाहर जाते हुए और अंतिम 5 मिनट की कॉल हो चुकी है। Not so much in confidence of the defender. A defender who is not very confident. You cannot have him in that left corner. That is an error there. Let's listen to Kiranpal Singh साहब। पैर का ध्यान रखो, सिर्फ पैर में शिस्त ले। तुम देखते नहीं, आंखों में आंखें डाल खेलो ना, उनका डिफेंडर कहाँ देख रहा होगा कि यहाँ तो पैर में। और नवीन जो उन्होंने किरणपाल सिंह जी ने यहाँ पर बात कही है ना, पर चलिए रोहित कुमार साहब ज़्यादा शायद कुछ कह नहीं रहे हैं कि चलिए खिलाड़ी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ से प्रदर्शन करना है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मराठा मार्बल कोच? सेकंड हाफ टाइम आउट ओवर। पर किरणपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डिफेंडर की आंखों में आंखें डालकर खेलिए। नवीन, चूंकि आप कबड्डी के वन ऑफ द एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा, जब रेडर होते हैं, रेड करने आते हैं डिफेंडर के लिए, क्या वहां पर आंखों में आंख डालकर वहां पर रेड करते हुए नजर आते हैं? क्या संदीप यहां पर डिफेंडर की आंखों में आंख डालते हुए रेड करते हुए नजर आएंगे? शायद एम्प्टी रेड करते हुए नजर आएंगे। कंट्रोल टीम। So more than the eye contact, you'll have to know where the body is being positioned, especially those legs. As Gautam Thomas, he targets the legs. That is more important. You don't have to look at the faces. The legs are very, very important. And when you go back and trying to put a statement out, then you can lift up your head and look at them into the eyes, or rather stare them into the eyes. Even now, Maratha Marvels hold the edge. But I'm really thinking if Anubhav, can keep up his nerves, or rather get substituted. Kiranpal Singh Saab should bring in somebody on that right corner and take off Anubhav and put another defender. Very, very important, as Arman is back in a Doda raid now. और चलिए ये रेड दिलों को थाम देने वाला होगा। अरमान यहाँ पर डू और डाई रेड में आएंगे। जब जब अरमान बाहर जाते हैं, टीम थोड़ा सा ऑल आउट की तरफ बढ़ता है और अरमान को रेड पॉइंट क्या मिलेगा, देखना होगा। कितना अंदर जाने का प्रयास करेंगे। लगातार दूसरी बार किक का प्रयास किया है और अपने अलग स्वैग में कह दिया कि आई एम अरमान, और मेरे अरमान तय है कि मैं पॉइंट लाऊंगा। गौतम तोमर शायद वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद है, देखना होगा। He runs in properly and then kicks the right corner, and then also understands that he has to take off another raider from the Maratha Marvels' den. It's so important for Arman to pull out that raid. And I'll still ask a big question. What was Gautam Tomar doing in the defense in the right corner? And Arman! Maratha Marvel! When you did so well in the raiding, why do you have to do that, Arman? You can hit your head out, but then you shouldn't have done that. और शायद नवीन ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने गौतम से पूछा था, मुझसे भी पूछ लीजिए। क्या इसकी आवश्यकता थी अरमान? थोड़ा सा अपने नर्व्स को होल्ड रखना, और खासकर देखिए नवीन, बतौर खिलाड़ी से ज्यादा अगर आप बतौर कप्तान होना तो आपको एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। पर चलिए इस बार शायद वहां पर खिलाड़ी कोई गलती करते हुए नजर नहीं आएंगे। आरव यादव वहां पर मौजूद थे, अच्छा डबल थाई होल्ड किया है और मराठा मार्वल्स अब इस मुकाबले में धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पंचाला प्राइड के लिए मुकाबला मुश्किल बन रहा है। The running hand touch is really nicely done, and then what is happening for the defense is the right flank is getting really weak for the Maratha Marvels. As I keep saying this, Anubhav should understand that the defense should probably control themselves in the right corner. बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर हमारी जो ऑफिशियल्स की टीम है लगातार लगी हुई है, और सत्यम सिंह शायद अब बाहर जाते हुए नजर आएंगे। आदित्य कुमार को एक बार फिर से यहाँ पर अंदर की तरफ बुलाया है।
बहुत ही कड़ा मुकाबला बन रहा है। पंचाला प्राइड अभी भी यहां से वापसी कर सकती है, पर इस सुपर टैकल की आवश्यकता होगी। मराठा मार्वल्स के रेडर निखिल चाहेंगे ज्यादा अंदर जाएं ही नहीं। अंकित सिंह, आदित्य कुमार वहां पर आपको नजर आएंगे कॉर्नर संभालते हुए। विशाल कुमार शायद वहां पर सब्स्टिट्यूट खिलाकर अंदर बुलाया है। विशाल कुमार भी एक रेडर है, 12 नंबर जर्सी। अंतिम 3 मिनट का समय शेष बचा है। नवीन, ये मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांच की परिसीमा को प्राप्त करता हुआ नजर आ सकता है। जल्दी जाकर जल्दी आए हैं, यानी कि डू और डाई रेड का वेट कर रहे हैं। अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अगर आप टैकल करेंगे तो सुपर टैकल हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उदय तिराज आते हुए अपडेट पर। Let me just go back on to whatever we saw from Aman. Oh, come on! Udit will really get a very, very easy point from Arjit Singh. He's unhappy with something. He's really not very impressed with the defense because he's some support to come in. And Ankit, let me tell you, before pointing the fingers out, see what you did. You're tackling a raider outside the back line. You cannot expect the support to come in. That's something that you have to understand in a hard way. As Vishal Kumar now comes in, as Marathas have their nose in the front, steal the bonus, but one is really impressed me, Harshit. No doubt. He has to be on the mat, and whenever he's not there on the mat, Panchala struggles. Has come in a super tackle situation. He struggles his best. Somebody hold his top body. You've been letting go of the top body. Come on. He will reach the midline in no time. It has to be 15 more seconds to go for it. Somebody hold him. Come on. He's done it. He's done it. Udit. 4 point. How can you keep on holding and clinging on to the legs if you don't control the upper body? What a struggle। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आप सिर्फ लेग्स को होल्ड करते हुए वहां पर इस तरह से सुपर टैकल कर नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर अटेम्प्ट किया, बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर शो की और बहुत अच्छा डेडिकेशन दर्शाया, ये डिटर्मिनेशन दर्शाया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर मौका था या तो आपको खड़े होकर एंकल को खींच सकते थे, पर यहाँ पर हल्का सा मिड लाइन को क्रॉस किया और उदित ने कहा कि यहाँ से हमारे लिए मुकाबला उदय हो चुका है, यहाँ से हम लगभग अब जीत की खुशबू आ चुकी है। संदीप, बोनस पॉइंट मिल जाएगा आपको, पर शायद अभी मुकाबला Yeah, I was just counting the number of attempts that he put in. 11th attempt, he crossed the midline. 11th attempt. Oh, unbelievable. Udit, the raid of the match. Raid of the match for me. And see where is number 7? Why are you in the left in position? What is the necessity? Can you do an ankle hold from a left in on Gautam Toma, who's very quick? Why do you do that? Now, that is my real concern. Turn the pages across, Sandeep. Oh, he wants to pull out Nikhil outside his court and go back to raid once more. That's a good thinking, but unsuccessful. और अब तो अंतिम 1 मिनट का वहां पर अंदेशा हो चुका है और ये तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाकर निखिल ने प्रयास किया कि चलिए शायद 1 पॉइंट दे दिया जाए। थोड़ा सा प्रयास किया, जरूरत है यहाँ से डिफेंस करने का। 33-40 का स्कोर है। मराठा मार्वल्स इस मुकाबले में आगे बढ़ा है, तो जितने उनकी रेडर्स की खासियत रही है उतना ही पंचाला प्राइड के डिफेंस ने गलतियां की है। मराठा मार्वल्स Now see where is Arman. Now see where is Arman. This is the problem. 1 point Maratha Marwal. This is the problem. 7 out. When you have so much good skills in the left corner, what are you doing in the right cover? And now it is Uday Tabas and Gautam Toma. Why do you have to be, master of all, jack of none sort of a thing? You be a master in what you do. I was appreciating so much for Aman's skills today, and that kick reminded me of the big Ronaldo or Messi's kick towards the goal post that he kicked the right corner. Very, very new strategy that was brought by Aman. Tall raider, tall lanky defender. He can do well, and again he's on the right cover. He got a touch point, and now he's allowed Uday Dabas to go back onto Nishant, and then again a touch point. 1 point Maratha Marwal. How do you control this? How do you control this? I think you know what? Along with Josh, Jaspa and Junoon, we also need to put another word out. Dimag. Exactly. देखिए वो धैर्य, वो पेशेंस आपको अपनी स्किल्स पर। और संदीप, ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा दिल जीत रहा है। इस खिलाड़ी को मैं लगातार अब आने वाले मुकाबलों में खेलते हुए देखना चाहता हूं पंचाला प्राइड के लिए। आज भी सब्सिट्यूट होकर यहां पर शुरुआत की इन्होंने अपने गेम के लिए, और ये इनका शायद 9th रेड पॉइंट है।
और ज़्यादा वहाँ पर फर्स्ट हाफ में इन्होंने रेड की नहीं थी। अब उदय, ये खिलाड़ी मराठा मार्वल्स के लिए आज एक मार्वल के तौर पर उभरे हैं। 14 पॉइंट आज इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए प्राप्त किए हैं। अंतिम रेड है ये मुकाबला। इस रेड के पश्चात विसल बज जाएगी कि ये मुकाबला गया है मराठा मार्वल्स के पक्ष में। ओ, इससे पहले यहाँ पर क्या एक आपको शानदार टैकल देखने को मिलेगा। पंचाला प्राइड क्या यहाँ पर उदय को यहाँ पर आउट किया है? जी हाँ, बिल्कुल। जाते जाते 37-42 से शायद ये मुकाबला हार जाएगा पंचाला प्राइड। Yeah, the back hold coming in very strongly from that left corner. It was not Arman hold done by another defender, and Maratha Marvels have won this game. The much needed game, 42-37. Panchala Pride get 1 point out of this match, but Kiran Pal Singh Saab will feel okay. We have kept our hopes alive in this monsoon edition to keep ourselves alive and available for the challenger round to go ahead. And I will once again say, where did Panchala Pride go wrong is in the defense, because in the second half it was 3 super raids that were given away back to back. Bonus plus two was taken away by Uday, Nikhil, and also Anubhav, who was very good in the first half, did not fire in the second half, but that's okay. The Raiders have done well. But for me, the pick of the players in the Panchala Pride is definitely Arman, and he has to understand that he's a very good raider. He is a very good left corner. That is what he has to get in his kitty, very rightly. और खासकर देख भी लेते हैं ना, ये हाईलाइट देख भी लेते हैं, इसमें आपको डिफेंसिव एरर्स यहाँ पर नजर भी आएंगे। आपको नजर आएगा यहाँ पर उदय दबास का अच्छा प्रदर्शन, निखिल का अच्छा प्रदर्शन। मराठा मार्वल्स एक बार पीछे हो गई थी, पर उसके पश्चात उन्होंने एक बार वापस दर्शाया कि अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, तो आसानी के साथ मुकाबले में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। प्रिंस राज आज शुरुआत में अच्छे नजर आए, पर इस खिलाड़ी का लहू यहाँ पर एक बार फिर से खोला है, यानी कि खून खोलते हुए नजर आया है। संदीप एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छी तरह से अपने स्किल्स को यहाँ पर लागू किया है। संदीप की हम लगातार बात कर रहे हैं, कई बार अच्छा प्रदर्शन नजर आया आरव द्वारा। अनुभव राठी ने दूसरे हाफ में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, और किरण पाल जी ने कह दिया कि इस मुकाबले के लिए टाटा बाय बाय है, पर युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में हम बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। Yeah, 32 raid points. That means Maratha Marvels have come back very strongly in the second half. See, if you remember, it was only 19 apiece when we were in the, I think we were still left with 16 minutes to go in the second half. So it was 19 all, and then see what has happened. It's all the Raiders that has done well, and even if this Panchala Pride should do well in the defensive skills, and see, that's what I say. The war is not won now for the Panchala Pride. The raid points is what is the culprit for them. And defensive skills from both the teams are not so right. Not so right, apart from Arman for Panchala Pride, and in the first half, Anubhav for the Maratha Marvels. But Raiders steal the show for Maratha Marvels. It was Uday and of course Nikhil making it a really good match for Maratha Marvels, and they stay on. They hang on, I should say, in this monsoon edition to go through to the challenger round. But still, there is time. Somebody else, I think even Panchala Pride and Vijayanagar Veers can back and topple them from that 7th place. So Maratha Marvels need to keep on winning. They have to keep on winning, as we have Uday Dabas with the 100 strike rate today. 14 raids, 14 raid points. And the defense, as I said, is going to be a little tricky. Very tricky. I will want to see somebody there coming up. I think it's going to be Arman. Yes, it is. It has to be. 3 tackle points only, and look at the number of attempts he's made. 11 attempts. Because he was standing in different places. What was he doing in the right cover? What was he doing in the left in position? He's a very good left corner defender. Take it from me, he's a very good all-rounder. He's a very good left corner defender. He can raid in well when the team needs him. That is what he needs to concentrate on. And the more quicker that he gets it, the more better for Arman Sharma and Panchala Pride. So Harshit, I'll leave the mic to you, as you'll have to make sure all the other proceedings are done well. Thank you so much, Harshit.
A warm welcome to the post-match presentation of match number 64, day 14 of Yuva Kabaddi series, Monsoon edition. और सीधा चलते हैं यहाँ पर. First, we are going to thank our partners, Dream 11 broadcast partner, Fan Code Physio partner, UEM, our Voice of Kabaddi, Radio City 91.9 FM, our healthcare partner, Zendic Super Speciality Hospital. और आज चलिए यहाँ पर हमारे साथ होंगे प्रेजेंटेशन में हमारे स्पेशल गेस्ट. आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विकास सिंह जी, द प्रेसिडेंट ऑफ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड. सर, तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहेंगे युवा कबड्डी सीरीज में. और ये मुकाबला नंबर 64 है, यानी कि ये मुकाबला खेला गया पंचाला प्राइड वर्सेस मराठा मार्वल्स के मध्य. दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन गेम था, जिसमें बाजी मारी है मराठा मार्वल्स से. यहां पर जीता है इस मुकाबले को 42-37 से. तो चलते हैं सीधा अवार्ड सेक्शन की तरफ. अवार्ड सेक्शन की बात करते हैं. बेस्ट लीडर के साथ ये अवार्ड जाएगा फ्रॉम द टीम ऑफ मराठा मार्वल्स, उदय दबाज, जिन्होंने प्राप्त किए 14 पॉइंट्स. देखते हैं किस अंदाज में किए हैं. और चलिए अब समय है बेस्ट डिफेंडर की बात कर लेने का. ये खिलाड़ी एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल साबित हुए हैं. ही इज फ्रॉम द पंचाला प्राइड, द कैप्टन हिमसेल्फ, अरमान, कलेक्टिंग 3 पॉइंट्स. और इनके कुछ शानदार टैकल्स अब आपके सामने स्क्रीन पर. और चलिए अब समय है कबड्डी के कमाल अवार्ड की बात करने का. ये अवार्ड जिस खिलाड़ी को जाएगा जब टीम को यहां पर लग रहा था कि मुश्किलात हो सकती है, तब ये शानदार मूव लगाकर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आए थे. ही इज अगेन फ्रॉम द मराठा मार्वल्स, उदित यादव फॉर द मूव ऑफ द मैच. आइए देखते हैं क्या वो मूव था. Now this is all from the post match presentation. बहुत ही जल्द मिलेंगे एक बार पुनः आप सभी के साथ.